Okay, Sasikala, how are you feeling right now? Sir, I'm feeling like Comfortable? fine. Yes, sir. I'm Okay, comfortable. so are you ready for your mock interview? Yes, sir, I am. Okay, Sasikala, just introduce yourself in a brief. Yeah. Good evening, sir. I'm highly obliged to you for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Shashikala. I basically hail from the state of Chhattisgarh. I did my schooling from here and bachelor's also from here. Uh, and then I moved to Mumbai where I did my master's from IIT Bombay. Then I did a project where I joined as a JRF, and the project got recently over in February 2024. This is about my education and professional background. And in my leisure time, I like to sing and listen to podcasts and do walking. So yeah, that would be me. Thank you. Okay, so okay, all right. Sasikala, right now you are working under any project, right? No, sir, the project got over in February 2024 itself. Okay, so currently, what are you doing? So, sir, I gave patent examiners exam, so I qualified, right? So I'm preparing for this, but I am also applying for PhD opportunities. And today itself I had an interview, so in the morning. So yeah. Okay, Sasikala, it's a very different and unique question. So why you want to take part in mock interview? Yes, sir. Sir, actually, like I tend to fumble and sometimes I get nervous. So that's why I wanted to, make myself more comfortable. And because my I it has been some time since I have completed my MSc, so I wanted to brush up the what do we say the concepts. Yeah. Okay, so how many videos related to the mock interview have you watched till now? So yeah, all all of them. Okay, so okay, now begin. Sasikala, what is the gene expression? Gene expression. Okay. So, sir, it is the process which occurs in every cell through which the DNA makes RNA. So, yeah, this process is called gene expression, where a particular where a particular DNA stretch gets transcribed to become RNA, and this is called expression. But some of the genes may also get translated into proteins. But yeah, Okay, can only transcription, that is the conversion of a DNA into the RNA, can consider as a gene expression? uh, sir, I think expression involves the expression involves proteins. Yeah, the translation when the proteins get translated, then we will call it expression. Okay, make it easy. Suppose you have a sequence like as a conversion of a DNA into RNA, conversion of RNA into the protein. So which part and which segment you will consider under the gene expression? That is from entire DNA to protein, or only DNA to RNA, or RNA to protein? Mm. Sir, I would consider from DNA to protein as expression. DNA to protein. That means we can also say that ki central dogma process is one another name of the gene expression. Mm, okay. Can I we haven't use thought it like that. can we Like use this I term? have never thought. I'm not sure, but I never thought it in this way. But this is interesting. I think So, we can like think about the it. answer I get. Yeah. Yeah. Okay, moving ahead. Sasikala, in prokaryotic for the gene expression, there are a certain operon model. Have you heard about the operon? Yes, sir. What I is have. operon? So it is the functional unit, and it is mostly we use the term operon for prokaryotes. Yeah. So it is the functional unit of gene expression. So operon consists of few elements which involves promoter, operator, and structural genes.
And upstream of promoters, sometimes there are some sequences which are called enhancers as well. So yeah, that is the functional unit of gene expression in prokaryotes. Okay, what are the inducible and repressible kind of operon? Hmm. Yeah. So inducible operon is, uh, I will explain by an example. So lac operon is an inducible operon that which means when uh, it can be triggered to transcribe the uh, RNAs and further express the proteins. Uh, but in repressible operon, it should be turned off. Like it is working fine. Like it is working. It is expressing the uh, genes and making the proteins. But when uh, there is some stimuli, then it will get stopped. So this is repressible. And the example for repressible operon is tryptophan operon. What is catabolic and anabolic operon? Catabolic and anabolic. So Have you heard it about can this? be, yes, I have. Okay. So in catabolic, so lacoperon can also be considered catabolic because in lacoperon, the gene transcribed and expressed, it transcribes beta galactosidase, which is an enzyme uh, breaks down the uh, which break downs lactose into glucose and galactose. So that is catabolic because it is breaking down the substrate. And the anabolic operon, which is in tryptophan. So when tryptophan is basically in anabolic operon, the tryptophan gets made during that process. So that is why it is called anabolic operon. Yeah. What is positive and negative control? Positive and negative control. Yeah. So positive. So in positive control, uh, wh- so I will take again the example of lacoperon. Okay. In that we can understand the concept of positive and negative control. In positive control, when there is presence of when there is presence of when there is presence of lactose, the the operon will transcribe their genes and make this will be the positive control because the operon is working. But in negative control, we have to stop it, basically uh, the expression. So when there is uh, glucose present in the system or in the media, so there is no requirement of breaking down the lactose. So that would be the negative control. Okay, Sasikala, can we use like operon slash that is catabolic operon slash negative operon like that in this manner? Sorry, sir, I didn't get your question. My question is that can we use lycoperon slash that is an Oh, example of yeah. a negative control operon, or also an example of a catabolic. So catabolic operon can also be used as a lycoperon. Lycoperon can also be used as negative operon. Can we use such kind of a statement? Yes, sir. Actually, lacoperon is an example of catabolic operon. But in lacoperon, we also see there are two types of controls: positive and negative both. Okay, well done. Well done, Sasikala. Have you heard about the diauxic or biphasic growth? Uh, yes, I have. I have heard about it. I would attempt to answer. Yeah, yeah. So Go ahead. dioxic. Yeah. So when a bacteria or any microorganism is lacking some gene and we are providing it from outside. For example, I think I have heard about yeast, which is lacking histidine, I guess. So they are not able to uh, utilize or produce histidine inside.
the cell, but when we are providing it from outside, they are able to sustain. And biphasic, I think, yeah, when yeah, in media, when there are two sources of uh, energy, or let's say sugar, one is glucose and another is lactose. So the bacteria will first utilize glucose and then lactose. So we see a graph which has like two plateaus. So I think that's biphasic. Okay, Sasikala, suppose there is a two culture media. One culture media contain only glucose, another culture media contain glucose and lactose both. Hmm. So, is there any differences in their growth pattern? Like as if we draw the bacterial growth kinetics curve, like as a lag phase, log phase, secondary phase, whatever, Yeah. etc. So, will we there are any differences in both media? That is, one is the glucose, another is the glucose and lactose, or both will be same? No, so there will be difference, as I like earlier explained as Have well. you So ever have you ever go through this such kind of a graph? That is bacteria showing diaxic or biphasic growth. I have seen biphasic, but I must have seen, but I'm not able to recall right now. If there is only glucose, Suppose so we will suppose get. suppose you have a graph of both kind of a bacteria, that is both kind of a growth. That is, one is for the normal growth, and another is the for diaxic growth or biphasic growth. So will you be able to distinguish between them on the basis of their growth pattern? Yeah, I will be able to. Okay, so later on I will show the photos of that two growth pattern, and then I will ask Sure, to you, okay, which one is the okay, normal or biphasic. Okay. sure, sir. Sure. Yeah. Okay, Sashikala, in gene expression, there are certain terms utilized, that is activator, enhancer, inducers, etc. What is the activator and inducers, and how these two terms are different from each other? Activators Activated. and inducers. Mm, activators and inducers. Sir, I'm not able to recall right now. Okay, Sashikala, what is your favorite dominant topic or area of interest? Sir, it's like molecular biology. And also, since my project involved a lot of microbiology, so I know basic microbiology. So, Okay, yeah, that, so are you means you are more comfortable in molecular biology than microbiology? yeah, yeah. Okay, Sashikala, prokaryotic cells as well as eukaryotic cells, both kind of cells have their own DNA polymerase, and the prime function of a Mhm. DNA polymerase is to synthesize DNA molecules in the replication process. Are there any Okay. differences in DNA polymerase of bacterial cells and DNA polymerase of eukaryotic cells on the basis of function? Function. Yeah. Yes. Bacterial DNA polymerase, it's like, I think it has the processivity, I think, in terms of processivity, if we compare. So DNA polymerase of prokaryotes lack, and like they are slower, and in eukaryotes they are much faster. Also, uh, the reliability, or I'm not able to use the exact term, but eukaryotic DNA polymerase uh, uh, polymerizes the DNA in much better way, or there are lesser chances of uh, wrong bases to be added in eukaryotic What DNA is the polymerase. fidelity? Yeah, fidelity. Yeah, yeah. That is the term used for yeah, this So term, like how you can define it? so fidelity is the, let's say, eukaryotic DNA polymerase are less, have less fidelity in, polymerizing the DNA, and but eukaryotic, uh,
DNA polymerase is have high fidelity because the chances of adding wrong bases is lower in eukaryotic. This is the comparison between the prokaryotic and eukaryotic DNA polymerase fidelity. But my question was that how you can define fidelity? What is fidelity? Oh, fidelity. Mm, fidelity. I think it's the ability to. Mm, uh, I'm not able to like Then what is read. processivity? So processivity, I think it's how fast, like uh, how much bases how many bases or nucleotide bases the polymerase can add per unit of time. So I think that's processivity. Okay, so these two terms are frequently used in the DNA polymerase, that is fidelity as well as processivity. So Hmm. based on these two parameters or these two factors or definitions, how you look in prokaryotic as well as eukaryotic DNA polymerase, which one is the better and which one is have good ability of that these two properties. So sir, I will definitely say eukaryotic DNA polymerase is better uh, because of course it has high fidelity. Uh, but uh, we also use bacterial systems for in biotechnology and all, because the we can work with even if there is less fidelity, but still we can work with the polymerases. Yeah. Okay, Sasikala, as we all know that DNA polymerase has a polymerizing ability in the 5 prime to 3 prime directions, right? Right. Why DNA polymerase can only synthesize new DNA molecules in the 5 prime to 3 prime directions, not in 3 to 5 prime direction? So because DNA polymerases require uh, 5 prime to 3 prime, right? Yeah. So DNA polymerases require uh, an OH group so that the phosphate can attack. Uh, I think we call it nucleophilic attacks. So that it is required for that. So yeah, that's why it adds from 5 prime to 3 prime. Okay, Sasikala, we oftenly use the term 3 prime and 5 prime. What is the means of prime and what is this 3 and 5? Yeah. So 3 and 5 it is related to the position of carbon in the sugar phosphate backbone. So the 5 prime is it corresponds to the fifth carbon of uh, the sugar backbone, but the third and the 3 prime is the third carbon of the sugar phosphate backbone. Okay, well done. Suppose, as we know, that is there are three domains of life: prokarya and eukarya and archaea, and all these organisms have a DNA as a genetic material, not RNA, right? Mm. Can you justify why DNA is better candidate for the genetic material as compared to the RNA? Yes, the basic reason which we have learned is DNA has uh, DNA has the sugar which at 2 prime position is the oxygen is removed. So it is deoxy at 2 prime, or the second position of the sugar. So it provides higher stability. Uh, that's why and that makes it more stable. That's why DNA as a genetic material is more reliable and more stable than RNA. Okay, so only that is the presence and absence of these oxygen group, oxygen atom on the ribose sugar. The Yes, sir. Like right now, I can recall this
reason. Okay. I think also, in RNA there is a difference of one base, which in DNA there is thymine, and in RNA there is uracil, and there is I think the difference is in the position of just a thymine is extra in uracil. Yeah, so I think that makes it more reactive, and which that makes it more reactive and also prone to mutation. RNA is prone to mutation because of that. So yeah, that is I think another reason. Okay, Sasikala, we oftenly use the term that is DNA is more stable as compared to the RNA, and that is why the DNA is genetic material in all the domains of our life, not RNA, right? Hmm. What would happen if the this stability is less? What are Hmm. the possible consequences if the DNA stability of the DNA will be lower than RNA? Why we are focusing on the stability of a DNA and significantly elaborate it? That is the reason behind that the DNA is the genetic material. That is, DNA is more stable than RNA. Hmm. Are you getting my question? If DNA were not to be stable, then what would be the Yeah. consequences? So, uh, so first of all, I think uh, the stable population uh, would not be possible. Like as like if I consider humans as an example, we have such a big genome, and if there is no stability, there is like mutation in every, like let's say 10 kb basis. So like I don't think like it would be possible for us to even live, because that's what makes us. So yeah, stability is most important thing. Without that, we wouldn't be existing. Okay. Well done, Sasikala. So come to the next. Suppose you are a researcher or research scholar and trying to express the activity and try to explore the phenomena like a semi-conservative mode of DNA replications. Hmm. How will Hmm. you prove by an designing of experiment or by stating some statement by doing some activity that DNA replication is semi-conservative in nature? What will be the technique you would use to prove it? Okay. So, sir, I can recall the experiment of Messelson and Stahl, what they did. So, they basically did like very simple and elegant experiment in which they grew, uh, they took bacteria only, they took E. coli, and they grew it in heavy isotope of nitrogen, where the media contained heavy isotope. And before that, it was growing normally in the normal N14 media containing N14 isotope. So when they shifted the bacteria to heavier isotope containing media, so after some generations they incorporated that, and and then when they isolated the DNA, and after that they ran it through no, actually, they did not isolate the DNA. They completely homogenize the cell, and then the cell extract was centrifuged in cesium chloride gradient, and then uh, it was observed over different generations, because and one another thing I would like to mention, that bacteria has a small generation time. It can double in every 30 minutes, so it did help them. So they studied it at like after every 30 minutes. So and they saw that in the first generation there was like you wouldn't be able to say uh, if the DNA is replicating in semi conservative mode. But from the second generation, so we will get a heavier band and a light band.
for DNA. So then, uh, and in the third generation, the heavier band the heavier band was completely restored, and the lighter band also was completely restored, and another band which was of the in between, I can say, the density, it was also present. So that's the way, yeah, they got to know. Okay, Sasikala, what was the chemical used as a nitrogen source in Michelson stall experiment for the nitrogen isotopic, that is 14 and 15? What was the name of the chemical? Name of the chemical. Yeah, because for uh, labeling or for incorporation of a nitrogen 14 and 15, there must hmm. be a chemical. Nitrogen cannot be assimilated in the form of elemental. Sir, I think ammonium chloride. I am asking to you. uh, I would say ammonium chloride. Ammonium chloride. Yeah. Okay. Okay, Sasikala. So now, if you have any query, any questions, and any doubt, any suggestions regarding your interview, so you can. This is the session is open for you, and be relaxed and calm down. And you can also talk in Hindi right now. So I will suggest what were the possible suggestions for you. ओके, और जिन जिन क्वेश्चंस का आंसर्स मैं जो जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे थे, उनके आंसर्स अगर आपको अभी डाउट हैं तो आप पूछ लीजिए, पहले उनको मैं बता देता हूँ, फिर आपके जो डाउट होंगे, लाइक जैसे मैंने आपसे पूछा फेडिलिटी और पॉसेसिविटी, वो आप थोड़ा सा वहाँ पे कन्फ्यूजन था। सो फेडिलिटी का Hmm. मतलब होता है द नंबर ऑफ अ बेस पेयर एडेड बाय डीएनए पॉलीमरेज विदाउट डूइंग एनी मिस मिस पेयरिंग। किसी भी Hmm. डीएनए पॉलीमरेज की वो एबिलिटी कि कोई रॉन्ग बेस पेयर को ऐड किए हुए ही कितना वो बेस पेयर को ऐड कर सकता है, राइट? दैट इज Right. कॉल्ड फिडेलिटी। while possessivity Hmm. is that is the rate of a DNA polymerase, that is addition of a nucleotide in a given time, that is per unit, Hmm. per minute. Okay, so Right. in the terms of processivity and fidelity, these two terms are used. So fidelity, that means the accuracy of a DNA polymerase, how many base pairs will add without doing any error, Hmm. while processivity is the number of nucleotide added by the DNA polymerase in a given time, that is Given 1 minute time. or 1 hour, etc. Yeah. Okay. Yes, sir. Yes, sir. I forgot to that word error. I और was. अभी अभी जो लास्ट मैंने सवाल आपसे पूछा कि कैसे आप ये प्रूव करेंगे कि डीएनए पॉलीमरेज आपका सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन होता है, उसको प्रूव करने Right. के लिए आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, दैट इज डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन और रन करा सकते हैं। और Right. डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशंस का जो पैटर्न आएगा, उस पैटर्न को दिखा करके आप बच्चे को बता सकते हैं कि हमने यहाँ पे क्या किया है, दैट इज नाइट्रोजन 15 लिया है, नाइट्रोजन 14 लिया है, दो सोर्सेस Hmm. हैं। और सेमी कंजर्वेटिव होने का मतलब यही होता है कि नेक्स्ट जनरेशन में एक स्ट्रैंड जो होगी पेरेंटल होगी, एक स्ट्रैंड क्या होगा Hmm. आपका, दैट इज न्यू आएगा। दैट इज वाई वहाँ पे Hmm. थ्री डिफरेंट टाइप्स के बैंड बनेंगे। वन जो होगा दैट इज Hmm. नाइट्रोजन 14 15 का बनेगा, अनदर जो होगा Hmm. ओनली नाइट्रोजन 15 का बनेगा, और नेक्स्ट वन जो Hmm. होगा नाइट्रोजन 15 का बनेगा, राइट? तो इस तरीके से आप डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशंस टेक्निक को यूज करके उन्हें डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। सवाल पूछा हाँ. जाता है कि डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशंस में कौन सा केमिकल यूज किया गया था डीएनए की बैंड को एलेबोरेट करने के लिए, तो आप वहाँ पे आंसर्स देते हैं सीजियम क्लोराइड। Sodium chloride. या और Right. अगर आपसे सवाल ये पूछा जाए कि सीजियम क्लोराइड ही क्यों यूज किया गया था, देन आपका आंसर क्या होगा? Sodium chloride. ओके सर, मैंने ना ये वाला पेपर पढ़ा था, तो लाइक ये सीशियम क्लोराइड काफी लाइक डेंस होता है। या और इसके जो इसकी जो डेंसिटी है वो डीएनए की डेंसिटी से मैच करती है। हाँ। दैट इज भाई, मतलब उस सॉल्वेंट का कोई इफेक्ट ना आए, नलीफाई हो सके, दैट इज भाई सीजियम क्लोराइड को आप क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो अमोनियम क्लोराइड यूज किया गया था नाइट्रोजन के सोर्स के लिए, नाइट्रोजन के सीजियम सोर्स के क्लोराइड को लिए यूज किया गया था डेंसिटी। सेंट्रीफिकेशन में डेंसिटी ग्रेडियंट बनाने के लिए मीडिया। ओके। और मैंने आपसे सवाल पूछा था कि सपोज जैसे आपसे मैंने पूछा कि कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक ओपेरॉन क्या होता है, आपने आंसर उसके ठीक दिए। ऐसा ओपेरॉन जहाँ पे उस ओपेरॉन के थ्रू, ओपेरॉन क्या है, जस्ट क्लस्टर ऑफ अ जीन, and the gene have a राइट। certain kind of a protein or enzymes which involve in राइट। the biosynthesis pathway or catabolic pathway। तो कोई एक ऐसा ओपेरॉन जिसके ओपेरॉन से जो जीन से आपका प्रोटीन बन रहा है, वो एंजाइम्स या जीन
ऐसे पाथवे में इन्वॉल्व हो जो कि क्या कर रहा हो, कैटाबोलिज्म कर रहा हो, जैसे लाइक एज हम्म। आपने एग्जांपल दिया लैकोपेरॉन, तो लैकोपेरॉन में क्या हो रहा है, केटा ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है बाय यूजिंग बीटा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम, while in case of a tryptophan there is a synthesis pathway, सिंथेसिस पाथ। tryptophan राइट। is a synthesis pathway। राइट। सो वहाँ पे ऐसे एंजाइम्स बनते हैं जो कि ट्रिप्टोफैन को बनाने का काम करते हैं। सो ट्रिप्टोफैन इज वन ऑफ द एनाबॉलिक ओपेरॉन एग्जांपल, while लैकोपेरॉन इज वन ऑफ द कैटाबॉलिक एग्जांपल, ओके। राइट। और राइट। और क्या सवाल पूछा था मैंने आपसे, कुछ याद है आपको? मैंने सबसे पहला सवाल आपसे सर पूछा आपने। था कि जीन एक्सप्रेशन से आप क्या समझती हैं। हाँ। बड़ा ही ट्रिकी राइट। क्वेश्चन था ये। हाँ। और सुनने में बहुत फ्रिक्वेंटली लगता है कि अरे जीन एक्सप्रेशन का मतलब वही होता है, लेकिन अगर आपको ऐसे थोड़ा सा लॉजिकली सोचना हो, जो जीन एक्सप्रेशन का एक एक्चुअली मतलब होता है कि जब तक प्रोटीन आपकी बन न जाए, एक्सप्रेशन का मतलब है राइट। कि प्रोटीन का फॉर्मेशन। तो प्रोटीन डेफिनेटली का फॉर्म। आपका डीएनए पहले फर्स्टली क्या होगा, कन्वर्ट होगा इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स आरएनए में, एंड देन आरएनए विल कन्वर्ट इनटू द प्रोटीन। द एंटायर प्रोसेस ऑफ दैट इज फ्रॉम डीएनए टू प्रोटीन इज नोन एज द gene expressions, जीन एक्सप्रेशन। right? So in bacterial case, there are certain operon. So operon is just a cluster of a certain genes, and that gene have a setup of a, that is structural as well as operator, promoter, and inducers. Such kind of a setup are known as the operon model. राइट। Okay. ओके सर। ओके, शशिकला, आपका सब्जेक्ट अगर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आपने उसको बताया है कि वो फेवरेट है, ऐसा पॉसिबिलिटी है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है कि आपसे इंटरव्यूअर आपको इस चीज़ के लिए ऑफर करे कि आपका फेवरेट टॉपिक क्या है और आप किस में इंटरेस्टेड हैं। अगर वो करते हैं तो वेल एंड गुड, फिर आपको अच्छे तरीके से बताना होगा, और अभी किन किन चीज़ों को आपको थोड़ी स्टडी करनी होगी उस पर बात करेंगे हम लोग। और अगर वो नहीं करते हैं तो उस केस में आपको क्या करना है, सपोज कि इनिशियली आप इंटरव्यू पैनलिस्ट इंटरव्यू रूम में आपने एंट्री किया, आप इंट्रोडक्शन दे रही हैं, उसके बाद से 3 मेंबर जो हैं उनमें से कोई सवाल पूछना शुरू कर दिया। मान लीजिए आपसे कोई जेनेटिक्स से सवाल पूछता है, कोई प्लांट बायोटिक्स से पूछता है, और आपका कॉन्सेप्ट उस पे नहीं है, तो शायद आप वहाँ पे कॉन्फिडेंस अपना लूज़ कर सकती हैं, क्योंकि आपको बहुत हाँ। प्रेशर होगा। सो इन दैट राइट। सिचुएशंस आपको बी पोलाइट, आप सिंपली कर सकते हैं कि सॉरी सर, राइट नाउ आई एम अनएबल टू स्पीक से समथिंग अबाउट दिस। It would be better for me if you ask some questions regarding molecular biology, whatever you want, right? सो इस तरीके से अगर आप रिक्वेस्ट कर देंगे तो उनका जो मतलब डायरेक्शन होगा वो आपकी तरफ क्या करेगा, मुड़ हाँ। जाएगा। तो उस टॉपिक पे आपको थोड़ा सा पकड़ बनानी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने आपसे सवाल पूछा कि डीएनए पॉलीमरेज हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम पे ही काम क्यों करता है, आपने इसका आंसर दिया कि सर डीएनए, जैसा कि आपको मालूम है कि डीएनए पॉलीमरेज इटसेल्फ डज नॉट हैव एबिलिटी टू पॉलीमराइज न्यू स्टैंडर्ड डीएनए स्ट्रैंड, इट कैन ओनली ऐड द न्यूक्लियोटाइड। एट द Okay. Yeah. न्यूक्लियोटाइड्स। And for the addition of that, there is a requirement of a nucleophilic attack. And for nucleophilic attack, 3 prime hydroxyl group provide that attacking species molecules. That is why all the DNA राइट। polymerase will always move in the 5 prime to 3 prime directions. ओके। राइट। सो आपको थोड़ा, जैसे आपने, वैसे आपकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे समझ ठीक है, शायद कुछ बोलने का प्रॉब्लम हो रहा था, और कुछ मुझे ऐसा लगा जैसे टर्म्स और सेंटेंस की प्रॉब्लम हो रही है। एट दैट टाइम हाँ। आपके पास टर्म्स नहीं वो मिल पा रहे थे जिनको आपको यूज करना है। जैसे आप राइट। फ्रेजिलिटी को जब आप डिफाइन कर रही थी तो आपको आइडिया था कि ये क्या है, हाँ। बट आप उसके उस टर्म्स को थोड़ा कैच नहीं कर पा रही थी। तो ये जो हम्म। प्रॉब्लम होती है वो इस वजह से, क्योंकि हो सकता है कि आप बहुत टाइम से इन सारे टर्म्स से और सब्जेक्ट से और टॉपिक से काफ़ी दूर हाँ। रही हो, काफ़ी गैप हो गया हो, इस वजह से ये चीज़ें राइट। हो जाती हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना। इंटरव्यू आपका कब है, 12 को? नहीं सर, 13 को है। 13 को, ओके। तो अभी आपके पास मतलब 11 और 12 को होगा। अभी आप कहाँ हैं, न्यू दिल्ली में? नहीं। नहीं नहीं सर, अभी मैं घर पे हूँ। अच्छा। और मेरी कल ट्रेन है तो मैं कल निकल रही हूँ। तो और दिल्ली कब रीच करेंगी? मैं 12 की अर्ली मॉर्निंग में रीच कर जाऊंगी, तो 12 का पूरा दिन रहेगा मेरे पास। ठीक है, तो आपको जब टाइम मिलेगा तो आप उस टाइम पे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का जो बेसिक टर्म्स हैं और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उन पे फोकस कर लीजिएगा। बाकी अपने बारे में थोड़ा, जैसे आपने, आपका जो करेंटली वर्क है, सपोज अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि शशिकला, अगर आप इस पोस्ट के लिए सेलेक्ट अगर नहीं होती, देन आपका स्टेप क्या होगा, आप क्या करना करेंगी और क्या करना चाहेंगी, तो उसके लिए अपना आंसर सोच लीजिएगा कि आप टीचिंग करेंगी या फिर कंटिन्यू कोई रिसर्च का प्रोजेक्ट करेंगी या फिर से कंटिन्यू तैयारी करेंगी, वॉट एवर विल द आंसर, उसको आप देख लीजिएगा, राइट। और आपके जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, किन चीज़ों से आपको बहुत डर लगता है, लाइक इस कौन सा ऐसा पेपर है, सब्जेक्ट है जिसपे आपकी पकड़ बहुत ही खराब है, उस पर भी देख लीजिएगा। बहुत अच्छा है वो तो आपने बता ही दिया।
तो ये 3-4 सवाल होंगे आपसे कि करंटली आप क्या कर रही हैं, नहीं सेलेक्ट होंगी तो आप क्या करेंगी, और आपका जो फेवरेट टॉपिक है वो क्या है, और उस पे आपसे बात किया जाए। ठीक है? बाकी इंट्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है शशिकला, उसको आपने ठीक दिया। और ऑलमोस्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि 70 to 80% जो मैंने मौलिक बायोलॉजी से सवाल पूछे हैं उसका आंसर आपने सही दिया है, और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये वीडियो आपको मिलेगा, तो आप उसको आसानी से रिकैप करके देख लीजिएगा, तो आपको आइडिया लग जाएगा। और उस हम्म, वीडियो सेशन में अगर कहीं पे भी आपको लगे कि जो सवाल मैंने आपसे पूछा है और अभी मैंने हम्म, उसका डिस्कस नहीं किया, और आपको हम्म, वो परेशान कर रहा है, तो डेफिनेटली आप उसको मैसेज करके पूछ सकती हैं कि सर, आई वांट जस्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सो आई विल डेफिनेटली आंसर यू, राइट? चलिए, और कुछ पूछना है शशिकला आपको? सर लाइक आवाज़ ठीक थी, लाइक कॉन्फिडेंट लग रहा था हाँ, आवाज़ से। आवाज़ ठीक है। और देखिए, होता ये है कि अभी फर्स्ट टाइम पे मेरा आपसे इंटरेक्शन हुआ है, तो और ऐसे हाँ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे थोड़ी बहुत नर्वसनेस होती है, वो ऑब्वियस है, सब में होता है। अभी आप यूज्ड टू हो जाएंगी, सपोज अगर मैं आपका डेली क्लास लेना शुरू कर दूं जैसे, लाइक हाँ यस, तो आप एग्जैक्टली। एकदम मोर फ्रिक्वेंटली हो जाएंगी, बोलेंगे कि ठीक है सर, आप ही तो डेली डेली लेते हैं तो राइट। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो वो होता है, ये हम्म, ह्यूमन नेचर में है कि अगर आप फर्स्ट टाइम भी किसी से इंटरेक्ट होती है तो बहुत थोड़ा सा हेजिटेशन होता है। और दूसरा, आप यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए आए, तो आपके मन में 10 सवाल चल रहा है कि आई डोंट नो कि सर क्या पूछेंगे, उसका मैं आंसर कैसे दूंगी, फिर ये वीडियो पब्लिश होगा, फिर मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, तो बहुत सारे सवाल चलते रहते हैं दिमाग में। तो इसकी वजह से राइट। चीज़ें थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, अदरवाइज ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप वहाँ पे कॉन्फिडेंस फील करेंगे, बिकॉज वहाँ आपको एकदम रिलैक्स मूड में जाना होगा। और कोशिश हम्म, ये कीजिएगा शशिकला, कि जब स्टार्टिंग में आप इंट्रोडक्शन अपना दे रही हैं, तो थोड़ा फेस हम्म, पे हल्का हो सके तो आप काम डाउन और कामनेस एंड स्माइल रखिएगा, ताकि इंटरव्यूअर को लगे कि हाँ, आप रिलैक्स्ड और कॉन्फिडेंट हैं। और हम्म, इंट्रोडक्शंस के सबसे लास्ट वाला जो पॉइंट होगा, उसमें कुछ ऐसे टर्म्स आप यूज कीजिएगा जिससे कि उनको ये लगे कि आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, आपसे सवाल हम्म, वहाँ से किया जाए। राइट, ठीक है? राइट। यस सर, या चलिए, या इट कैसा हेल्प। कैसा कैसा लगा आपको मॉक इंटरव्यू देकर के शशिकला? यस सर, मुझे अच्छा लगा। एंड सर आपने जो पॉइंट्स बताए, इट इज़ वेरी रेलेवेंट किसी भी इंटरव्यू, आई मतलब सिर्फ इसी इंटरव्यू के लिए नहीं, लाइक आप किसी भी इंटरव्यू में जाएँगे, दीज़ आर वेरी रेलेवेंट पॉइंट्स। सो या एंड दिस पॉइंट दैट यू सेड कि लास्ट पॉइंट में आप कुछ ना कुछ ऐसा ऐसा छोड़ के जाएँ, कुछ ऐसे एग्जैक्टली, पॉइंट ये ट्रिक है, जो वो ये ट्रिक है कि हाँ, आप इंटरव्यूअर को अपनी तरफ क्या करें, मोल्ड कर पाए। या एग्ज़ैक्टली। राइट? तो क्योंकि लास्ट वाले पॉइंट का ही वेट करते हैं कि जब आप इंट्रोडक्शन, जब आप जब इंट्रोडक्शन दे रही होगी ना, तो फिर अपने सब लोग पेपर ऊपर ऐसे ऐसे कर रहा होगा। जब भी आपका हाँ, पॉइंट खत्म होगा, तब उनका सवाल पूछना शुरू होता है। तो जो खत्म वाला हुँ, पॉइंट है, एंड पॉइंट है, उस पे आप हुँ, कोशिश हुँ, कीजिए कि वो की टर्म्स आप छोड़ के जाइए, ताकि वहीं से सवाल हुँ, आपका शुरू हो जाए। और राइट, इनिशियली अगर आपने 5 मिनट्स आपके फेवरेट डोमेन से, आपके फेवरेट टॉपिक से अगर सवाल होना शुरू हो जाएगा, तो डेफिनेटली यू विल गेन अ वेरी कॉन्फिडेंस एंड बूस्ट अप। Then after you या will very confident. There is will be no any issues, right? या So that is why I यस सर, suggest you कि drop some keywords, हाँ, right? राइट। For the interviewers. ओके शशिकला, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यू। और इंटरव्यू देकर के आप आइए तो बताइए कि कैसा रहा आपका इंटरव्यू। ग्रुप में आप लोग डिस्कस करते रहते हैं। और बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो डेफिनेटली आप मैसेज कीजिए, ठीक है? Okay. ज़रूर सर, थैंक यू सो ओके, मच मोस्ट वेलकम। एंड थैंक यू फॉर कंसिडरिंग माय रिक्वेस्ट टू रीशेड्यूल द मॉक। ओके, ओके, थैंक यू, मोस्ट वेलकम। या, बाय बाय सर, गुड नाइट। गुड नाइट।